7. We are going to start our first topic of math, that is integers. Let us know what is integers, from where it comes, and properties of integers such as addition, subtraction, additive inverse. This is a new term. We have to understand what is this: cumulative addition, associative law of addition. These are the new terms we are going to read here about this. Let us begin with integers. Integer is a part of number system, as we have already read in class 6. Natural number, whole number, odd number, even number, we all are known about this. So what is natural number? All counting numbers are called natural numbers. It is denoted by n. It is denoted by n, where n equals to 1, 2, 3, 4, 5, up to infinity. Okay, we have many numbers, so I have used here term plus infinity. It is called infinity. Okay, we all know about the natural number, but I thought that many of the students may not be known about this, so once I have to repeat this. Whole number. What is whole number? All the natural number with a zero called whole number. Natural numbers with zero is called whole number. It is denoted by capital W. W equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to infinity. Okay, whole number. Our main topic is what? Integer. Integer or positive negative numbers including zero is called integers. All positive negative number including zero is called integer. It means what? सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और उसमें जो जीरो रहता है इंक्लूडिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. ठीक है. और इट इज डिनोटेड बाय जेड. इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. जेड इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, माइनस इन्फिनिटी में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. जीरो है अपना यहाँ पे इंक्लूड है. जीरो यहाँ पे जीरो, -1, -2, -3, -4. जीरो के बाद इधर राइट साइड में क्या है? 1, 2, 3, 4 सारा 1, 2, 3, 4 जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर. और जीरो के इधर जो लेफ्ट साइड में है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर. और जीरो, तो यही सारा सब टर्म मिल के क्या बनता है? हमको इंटीजर्स बनता है. पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर. अब इसका इंटीजर का हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर. इफ वी ऐड टू इंटीजर्स देन आवर रिजल्ट ऑल्सो विल बी इंटीजर. अगर हम दो इंटीजर्स को एक आपस में ऐड करते हैं तो हमारा जो आउटकम्स होता है, रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है? इंटीजर्स ही होता है. इसको चलिए अब एग्जांपल के से समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल. 5 + 4 9. 5 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और ये 9 है. यहाँ पे 5 + 4 = 9. 5 + 4 इज ऑल्सो इंटीजर. -5 प्लस -2. -5 इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है और इसका रिजल्ट क्या आया? -7 आया. तो -7 भी इंटीजर है. नेगेटिव नंबर, नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड किए तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव आया. 7 + 7 प्लस -8, मतलब क्या हो जाएगा? -8 प्लस 7 है यहाँ पे. 7 प्लस -8, तो इसको करेंगे तो हमारा आउटकम्स आएगा -1, जो कि एक इंटीजर है. -1 भी एक इंटीजर है. ठीक है. 9 प्लस -3, 9 प्लस -3 अगर करते हैं तो इक्वल्स टू 6 आता है. तो ये भी हमारा इंटीजर्स है. दिस इज ऑल्सो इंटीजर. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर. नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर. Integers hold some property of addition. Which one is called closure property of addition? One first, second one is commutative law of addition, and third one is we going to read, that is uh, associative law of addition. We will know this three topics in brief. Let us start with the closure property of addition. What is closure property of addition? Closure property means the sum of integer is always an integer. We have looked above in the given example. If we add two integers, then our results, our outcome is also what? An integer. So it is also called a closure property of addition. Closure property of addition. The sum of two integer is always an integer. Okay. If we add any two integer, then we get an integer. We have already seen here above in the given example. Now second one is what? Commutative law of addition. Commutative law of addition. What is commutative law of addition? Commutative law of addition: if a and b are any two integers, then a plus b must be equals to b plus a. It is called commutative law of addition. LHS, we can say this is LHS, left hand side LHS, and it is RHS, right hand side. If we put value of a and b in both sides, then we get equal value. We can take any value of a and b, that must be an integer. Okay, let us take if a equals to -3 and b equals to 5 by formula. Now we put these two value in formula, then what we get? Let's have a look. A plus b equals to b plus a is our formula. A equals to -3, I have put from here. A equals to -3 and b equals to 5, I have used from the above taken
value b equals to 5, and again b plus a, 5 minus 3, b equals to 5 minus 3, b plus a. Here what we have to do first, plus minus 3. Okay, one thing I have done here, mistake. 5 plus minus 3, 5 plus minus 3, minus 3 plus 5, 2, 5 plus minus 3, it means that 5 plus minus 3, we can write this as 5 minus 3, 5 minus 3 is 2. We can see here in both side LHS and RHS we have got the same value, 2 equals to 2. So we can say that both LHS and RHS are equal, and in the addition of integers hold commutative law of addition. Okay, now next one is associative law of addition. Associative law of addition, here we take three integers. In this case we have to take three integers, then only an associative law of addition can be fulfilled. A plus b plus, sorry, if a, b and c are any three integers, then a plus b plus c is equals to a plus b plus c. Okay, here I have put the bracket in first two terms of, that is a plus b, and left c. In right hand side I have put bracket on b and c and left a here. Now put the value, we know the Bodmas rule. By Bodmas rule what we know, if there is a bracket then we have to solve the bracket once first. Here is a small bracket in a plus b, and in this side a small bracket is in b plus c. So we have to first solve the bracket, small bracket's value, by putting the value here. Let us take a equals to 3, b equals to minus 4, and c equals to 7. Now let's see what's happened when you put c formula. Okay. A plus b plus c is equals to a plus b plus. Here we have put the bracket in a plus b in LHS, and in RHS we have put the bracket in b plus c. A value, what is a value? 3. B value is minus 4, plus minus 4 plus c 7. A is 3, b is minus 4 plus 7. I have here used a curly bracket, or you can say a middle bracket, because a small bracket is taken by this minus 4. Okay, 3 plus minus 4 equals to what? 3 plus minus 4, if we do here, then 3 minus 4 we get here. 3 minus 4 plus 7 equals to, here what we get? 3 plus minus minus. Okay, minus 4 plus 7, what we get here? Plus minus minus, here value of 4 is greater, so sign taken by 4 is minus, so it we get 3. If we subtract 3 minus 4, then we get minus 1 plus 7, and in this case 3 plus minus 4 plus 7, 7 value is greater. Okay, 7 minus 4 equals to 3, 3 plus 3 6, we get here 6 equals to 6. LHS and RHS are equal. So we can say that associative law, integers hold associative law of addition. If you put here in addition case, associative law of addition is followed in the case of integer. Now our most important is the additive inverse. What is additive inverse? It is simple, very simple, that what is additive inverse? Value must be 0. If any value is given and it asks you to give its additive inverse, for an example, if a equals to a, in a number 5 is given, what is the additive inverse of 5? then what is said, the value must be 0. ऐसा पुट करेंगे इसमें कि इस टर्म में कि ये जब इसमें क्या ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाए. तो 5 प्लस माइनस 5, 5 minus 5 0. तो हम यहाँ पे क्या ऐड किए? व्हाट वी हैव ऐड हियर? minus 5. 5 minus 5 equals to 0. So our additive inverse of 5 is minus 5. In second case we have taken here a negative sign integer, minus 7. Minus 7, what is the additive inverse of minus 7? If asked, then minus 7 plus 7, what we can add so that its value will be get 0? Minus 7 plus 7 equals to 0. So additive inverse is 7. Additive inverse of 5 is minus 5. Additive inverse of minus 7 is 7. And confusion? I think there must not be any confusion because I have explained it clearly. Once again, 5, what is additive inverse of 5? So it क्या करना है ना, 5 का एडिटिव इनवर्स बोले ना, तो इसका क्या ऐसा ऐड करेंगे इसमें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए? क्या ऐड करेंगे? -5 ऐड करेंगे इसमें, तब ना इसका वैल्यू 0 है. सो इसका एडिटिव इनवर्स -5. -7 में क्या ऐसा ऐड करेंगे कि इसका वैल्यू 0 आए? तो -7 + 7 करेंगे तो इसका, तो 7 इसको 0 आता है. सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. अब आते हैं, एडिशन हमारा खत्म हो गया. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ये भी सेम एज एडिशन है. इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स देन आवर रिजल्ट विल आल्सो बी इंटीजर. अगर दो इंटीजर को एक आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है, आउटकम्स आता है, वो भी हमारा क्या आता है? इंटीजर्स ही आता है. फॉर एन एग्जांपल, 4 from 8. यहाँ पे देखो, फ्रॉम, व्हाट इज मीन ऑफ फ्रॉम? फ्रॉम मीन्स
वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना, ना कि 4 में से 8 को। किस में से करना है? 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना। ओके, मैनी ऑफ द स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड हियर कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना। फ्रॉम का मतलब ही होता है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया? 4, 4 भी एक इंटीजर है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -4, यहाँ भी क्या होगा? -4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सॉरी वीडियो थोड़ा हो गया, -4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस केस में भी -4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -4 -3 इक्वल्स टू -7, ठीक है। -7, तो -7 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डू नॉट होल्ड कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन जो है इंटीजर्स का, वो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। हम इसको देख सकते हैं एग्जांपल से, और आप लोग भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेके a का वैल्यू b का वैल्यू घर पे बैठ के अपना से ट्राई कर सकते हैं कि हाँ सही में सब्ट्रैक्शन कॉम्युलेटिव लॉ होता है कि नहीं होता है। इफ a इक्वल्स टू 5 and b इक्वल्स टू 3 बाय फार्मूला 5 - 3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ तो b 3 है, 3 - 5, अब a 5 है, 3 - 5 -2। यहाँ पॉजिटिव 2 है और यहाँ पे नेगेटिव 2 है, तो कभी भी ये दोनों एक आपस में इक्वल होगा? नो। सो 2 is not equals to -2. It means that subtraction doesn't hold commutative law as well as associative law, और ये associative law भी होल्ड नहीं करता है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो घर पे बैठ के ये जो फॉर्मूला हमारा था, क्या था associative law का? a + b + c, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, a - b - c, इसको पहले ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू a - b - c। अगर इस पे आप कोई वैल्यू पुट करते हो, अगर आपका दोनों LHS और RHS सेम आता है तो होल्ड करता है, नहीं आता है तो नहीं करता है। इसका मतलब अगर आप इसमें पुट करने वाले हो वैल्यू इसमें a और b और c का कुछ भी, तो आपका इक्वल आने वाला नहीं है। इसीलिए subtraction of integer doesn't hold associative law 2. Clear? Now you can solve your exercise 1a. You are ready to solve your exercise. Okay, no doubt. Exercise 1a, evaluate. Here is simply addition, subtraction, addition of integer, subtraction of integer, sum means additive inverse. I have already told. -83, what is the additive inverse of -83? What we have to put here to so that its value will get 0? +83, -83 plus 83, 0. 256 minus 256, 0, 0, 0 is always 0. So you can do is subtract. We have to do here subtraction 28 from -42। what we have to do here? -42 में से 28 को यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। ओके, यहाँ 5 नंबर, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1032 and its -1032 1032 and 878 from -34। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा? यहाँ पे ये दोनों का सम निकाल लेंगे, और ये दोनों का जो सम आएगा इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -34 में से। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन डू इट, simplify, you already know about this. If a equals to -8, b equals to -7, c equals to c, verify that a plus b plus c equals to a plus b plus c हर ब्रैकेट। वेरीफाई का मतलब होता है क्या? प्रूव करना। इसको प्रूव कर दीजिए। वेरिफिकेशन होता है ना, कभी कोई बोलता है कि इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, कोई चीज का वेरिफिकेशन हो, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए उसका। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को, 10 नंबर को। 10 नंबर क्वेश्चन, a equals to -8, b equals to -7, c equals to 6, वेरीफाई a plus b plus c equals to a plus b plus c। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू सिंपली पुट करेंगे, और लास्ट में वेरिफिकेशन अगर हमारा होना है, सही होना है, तो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, -8 प्लस -7 प्लस 6, इसका वैल्यू पुट किए यहाँ पे, हम भी यहाँ पे इसका वैल्यू पुट किए सिंपली, और लास्ट में जब सॉल्व किए तो यहाँ भी -9 और यहाँ भी -9 है। इट मीन्स दैट -9 इक्वल्स टू -9, we have get equal. It means the question is verified. Now you can do all the other questions. If any confusion you get, then you can ask me in the next class. So request all the students to solve their exercise 1a. Thank you. We will meet in our next video class. Okay, bye. Have a nice day.